Hello students, today we'll discuss the topic from your chemistry, that is the matter. Matter, as you all know, that matter is something which has mass and occupies space around us. Yes? So matter, बहुत सारी चीजें हैं ना हमारे आसपास. It might be air, it might be water, it might be things we are eating. So they have been all been classified into pure substances and the impure substances. So from the pure and impure substances, the word itself or gives the knowledge about what kind of substances they are. Pure means no kind of impurities in it. Okay, and impure means the impure state. There might be composition of two or three substances into it. So when we talk about the pure substance means gold is gold. When we break it also, when broken down into smaller pieces also gold ही रहेगा, है ना? जैसे आयरन लेंगे, आयरन का नेल लिया, if we have broken down it on, still it is a iron only. It will give the characteristics of that particular metal only. Okay, so pure substances means substances which cannot be broken down, okay, into the smaller substances. So accordingly then they have been divided into elements and compounds. Actually basically आप बोल सकते हैं कि chemical basis पे इसे divide किया गया था because ये देखा गया था can be it broken down into particles by any kind of a physical or chemical changes or not. So when again classified into the two categories on the chemical basis, what was elements and the compounds. Compounds say word, it is clear that it might be the mixture of two or more. It is a common word, compound. Okay, mixture. Okay, and when we're talking about the elements cannot be broken down into the smaller substances by any kind of a physical or the chemical changes. उन्हें नहीं break किया जा सकता. Okay, and in nature today till today 118 elements have been invented or discovered, and out of which 92 are naturally occurring. And I think so from this it is very important, like 118, what is this and what is the number of the naturally occurring elements on earth? 92. And what is the definition of elements? Elements that cannot be broken down into the smaller substances. Okay, that cannot, they have a particular we can say स्पेशल प्रॉपर्टी. गोल्ड की एक अपनी प्रॉपर्टी है, वो एग्जिस्ट कर देते हैं कैसे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर कोई और मिक्सचर है, नो, इट इज एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली. So as carbon, so as oxygen, any kind of element. So then we say that according to the basic of the properties, the elements were further classified. कि basic properties क्या रही होंगी, elements को further divide किया गया, metals, non-metals, metalloids. Later on, few of the they were divided that noble gas also has their own characteristics. So when you see in your later classes, you will see this periodic table, which actually we study very detail. The way they have been put into this table, Mendeleev ka table tha, ye periodic table. You would have studied in your GK who gave the periodic table. So it was Mendeleev, and this way he show the different elements which are present on the earth and the name also, like see hydrogen, this is the first element giving to the eighth element. ये groups हैं, ये क्या कहते हैं, different different shells होते हैं, accordingly उसको किया जाता है, but इतना ज़्यादा detail नहीं है. But हाँ, what are important are the alkali atoms, the metalloids, the non-metals and the noble means metals. Okay, see these are the metals one. These orange are the alkali metal. This ones. These are the ones which are metalloids, will be in orange in color. Boron, silicon, GeAs, arsenic, antimony, tellurium, 8. And the noble gases are the last one. This. Okay. अब little more अपन वहां से शुरू करेंगे जहां से हमने किया था कि metals क्या है. What are the metals? These are in sodium, potassium, Rb, cesium, precium. Okay. Meridium को हमने coming to the back to the topic again. हम मेटल्स पे आते हैं. मेटल्स में एक कॉमन दिमाग में क्या आता है, कॉमन मेटल्स हम देखते हैं आसपास, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, माइट बी दे हैव बीन यूज्ड इन द इलेक्ट्रिसिटी. सो अब जब इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो रहे हैं, इट मींस बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा. इट माइट नॉट बी रिड्यूसिंग इट्स साइज इन एनी काइंड ऑफ अ टेम्परेचर, बट बहुत हाई जाएगा तभी वो डिक्रीज होगा. सो दे विल हैव अ गुड हाई
MP and VP boiling point. For example, gold and silver. अब जैसे gold and silver we all are wearing, your mothers will be wearing, you can see that उतनी आसानी से it will not get down. वहीं पे नॉन मेटल्स की बात करते हैं. नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगेन जब बैड कंडक्टर्स है उसका अपोजिट करेक्टर क्या हुआ? दे विल हैव लो एमपी एंड बीपी. एग्जाम्पल हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. Then the metalloids, which show the property of metalloids, means both the metals and the not non-metals. Means some of the metals would be there which will give both the characters of the metalloids. देखिए periodic table में एक अलग से जगह दी है. बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक. मीन्स दे हैव बोथ द प्रॉपर्टी. सिलिकॉन के देखे आपने? सिलिकॉन के प्रॉपर्टी क्या है? उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हार्ड है. आजकल ज्यादातर जो यूटेंसिल्स दे आर ऑल मेड अप ऑफ सिलिकॉन. यस. सो वो मेटल्स में भी आ रहे हैं, नॉन मेटल्स में. एक ऐसा ही फिगर जैसे एक जो फ्लूइड है आपके हाथ में, जब दिस बच्चे यूजुअली प्ले करते हैं दैट व्हाट वी कॉल दैट जेली लाइक सब्सटेंस, उसको जब यूज करते हैं तो वो ना वो जेल में आता है ना वो सॉलिड फॉर्म में होता है. सो सेम एट इट सिलिकॉन, ना वो मेटल में है करेक्टर में आता है ना वो नॉन मेटल. सो इट शेयर्स बोथ द करेक्टर. सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल फ्रॉम व्हिच यू कैन गेट द आइडिया ऑफ अ मेटलॉइड. एंड नोबल गैसेस दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद एनी काइंड ऑफ अदर एलिमेंट्स. तो उनको अलग ही ग्रुप में पीरियोडिक टेबल पे जगह दी है. सो इस तरह से वी कैन वेरी क्लियरली फाइंड इट आउट दैट वेयर आर द सी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन. हीलियम और नियॉन तो बहुत बेसिकली हमें कहाँ मिलती है? हम सबसे लाइटेस्ट गैस है ना. हाइड्रोजन एंड हीलियम लाइटेस्ट गैस है. लाइटेस्ट गैस वी कैन सी देम इन द बलून्स, दे जस्ट फ्लाई ओवर. देन नियॉन वी कैन सी द गैसेस इन द ट्यूब लाइट्स. वाइट जो आजकल ट्यूबलाइट्स एंड दिस एलईडीज चले, तो नियॉन गैस वो दे इन द ट्यूबलाइट्स रिसेंट. उसके अंदर क्या होता है? लाइटर होते हैं. सो दे आर इजिली यू नो कैन बी इनसाइड दैट पर्टिकुलर ट्यूब, प्रेशराइज इन दैट पर्टिकुलर ट्यूब. देन कमिंग टू द बेसिक करेक्टर्स. अब हम करेक्टर्स की बात करेंगे, धीरे धीरे एक एक एलिमेंट्स को देखेंगे so that we can get an idea about how to define and what actually should be taken in mind when we are writing the things about it. बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बेसिक इसके बेसिक दिमाग में रखो. इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक टॉपिक्स ऑफ इट यू विल बी एबल टू डिफाइन इट और डिस्क्राइब देम इन योर वर्ड्स. लाइक सबसे पहले होता है कि एलिमेंट्स में एन एलिमेंट इज अ होमोजीनियस इन नेचर. होमो मींस सिमिलर. ओके, मींस गोल्ड गोल्ड ही है. इट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. देखो एटम्स फिर आया, छोटे 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 माइक्रोस्कोपिक आर एटम्स. टुगेदर दे फॉर्म दी मॉलिक्यूल्स. ये पहले भी पढ़ा है ना. सो दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. सो होमोजीनियस मिक्सचर है, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ अ एटम. Iron, silver are made up of iron and silver atoms only. So they are elements. दूसरा टॉपिक आता है एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस विद एनी काइंड ऑफ फिजिकल और केमिकल मेथड्स लाइक हीट हो गया, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन. और वो कैसे पता चलेगा? क्या आप किसी आयरन नेल को बॉयल करेंगे तो कुछ चेंज होगा उसमें? कोई चेंज नहीं होगा. क्या उसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करेंगे तो कुछ चेंज होगा? नहीं होगा. सो दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस. देन an atom is the smallest unit. ये बहुत basic question है. What is the smallest unit of an element? The smallest unit of element is the atom that shows all the properties of it. Hence, an atom of iron shows all the properties of that particular atom. Like for organ, iron का जो symbol है that is Fe, means it signifies कि उसके पास में कितने atoms हैं. Elements have sharp melting and boiling points. Means at particular temperature ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा कोई temperature या उसको hold करेगा, but they have a sharp means instant कि इस particular temperature पे it will get melt. So now coming to the properties of metals. Metals are the elements that readily lose an electron. ये थोड़ा सा higher standard का आपकी बात होगी, but still थोड़ा दिमाग में रखेंगे to form a positive or the cation. Means ये इस तरह के metals होंगे like gold, silver, जिसके खुद की प्रॉपर्टीज रहेंगी. इसके मत जाइएगा कि लूज एन इलेक्ट्रॉन्स. हम ये पॉइंट को थोड़ा सा बाद में हायर क्लासेस में रीड करेंगे. वी गो विद द टॉपिक लाइक मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, है ना. हार्ड होते हैं मेटल्स. दे हैव लस्टरस और शाइनी. लस्टरस का मीन है शाइनी. गोल्ड के पास शाइन है. देन metals are good conductor of heat and electricity. They can be used into wires, they can be used into any kind of electricity this appliances. Metals are malleable. अब देखो ये स्मॉलर स्मॉलर टर्मिनोलॉजीज का यू शुड नो द मीनिंग सो दैट यू कैन राइट इट इन योर ओन.
parts. What do you mean by malleable? It means that they can be easily hammered them into the thin sheets. Like aluminium की sheets मिलती है, सबसे बड़ा example इसका ही. Yes. Then metals are ductile. Ductile means what? They can be drawn into wires. बहुत basically मतलब हमें change कर सकते हो. Again aluminium, copper, है ना? They are sonorous. Sonorous का means होता है vibration से या noise से. So they give a ringing sound when they are hit by a hard iron. है ना? आवाज करता है ना iron, बहुत जोर से मारते हैं. Almost all the metals are solid at room temperature. Yes, we cannot see any kind of a metal which are liquid at room temperature. But हाँ होता है. कौन से होता है ये आपने पढ़ा है. If you know, then you can comment it, or you can see here also. Mercury at room temperature is liquid. Okay, और एक exception एक और भी आएगा, हम आगे पढ़ेंगे. But there are some exception for this. For example, sodium and potassium are soft metals. ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, ये आपको लैब्स में दिखेगा. Tungsten is a poor conductor of electricity. ये exceptions है. Okay, इतना ज्यादा नहीं है, but just for your GK if you want to, वो they can read through this. Then coming to the non-metal part. Non-metal का हमने पहले पढ़ लिया है कि वो hard नहीं होते हैं. They are either soft solids, soft solids होते हैं. Then they exist as solid, liquid and gaseous form. देखो silicon आ गया, है ना? Carbon आ गया, solids. Bromine is a liquid. Bromine is a liquid. Chlorine, fluorine, oxygen are gases. Non-metals are non-lustrous. Non-lustrous that are they have a dull appearance. Example: the surface of sulfur and phosphor do not shine. Most of the non-metals have very low density. बहुत लो है, as oxygen and nitrogen कितने हैं, बहुत lighter है. उनकी density क्या होगी? Low. Density means volume, mass upon volume. But we have diamond that are is the form of a carbon. और carbon diamond आपने सबने देखा, they have different reflective indices in between. From wherever we can see the 3D structure of it. So it is the strongest known substance. And they are not malleable also. Non-metal except a carbon are not ductile. They are bad conductors of heat and electricity. Again, an exception. Graphite is a good conductor. ये exception. Okay, and non-metals have a low melting and boiling point. तो बोलने का मतलब बिल्कुल बेसिकली चीजें रखनी है. जो नॉन मेटल होते हैं सॉफ्ट होते हैं, लेस शाइनिंग होते हैं या होते ही नहीं है, बैड कंडक्टर्स होते हैं और लो मेल्टिंग. Okay, and you have an example of a phosphorus and iodine. Silicon is a little more confusion later can be a metallite. Metallite में the elements which shares or intermediate properties both of the metals as well non-metal are called as metallites. So here comes the silicon जिसकी हम बात कर रहे थे. Germanium, boron, they react both with the acid and bases. They are amphoteric. Amphoteric मतलब न्यूट्रल वाला पोजीशन होता है. वो अगर आयंस कोई देगा तो वो चेंज हो जाएगा और वो बेसिक में चेंज होगा तो वो एसिडिक भी हो सकता है. So same as example consider boron, silicon and germanium. फॉर एग्जाम्पल इसमें ज्यादा प्रॉपर्टीज में जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ सिलिकॉन आपके दिमाग में है तो आपको मेटलॉइड्स की कैरेक्टर्स के बारे में पता चल जाएगा. यस. देन नोबल गैसेस भी डाली गई हैं दैट डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद अदर एलिमेंट्स. नोबल गैसेस को मैं अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ. नोबल गैसेस के बारे में भी रीड आउट करना. दैट इज हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन. These are the. Then compound क्या हुए? Compound means mixtures. A pure substances which is basically composed of two or more elements. देखो दो और more elements से बना है, which are chemically combined in a fixed proportion. Again the chemically combination. Therefore water is a compound. हमें पता है compound means it is made up of hydrogen, two as well as oxygen. Means two hydrogen atom together with the oxygen. So two elements से बना, it means it is a compound. And they have a fixed ratio. एक property होती है, एक fixed ratio होगा, ठीक है. Then properties of a compound. A compound is homogeneous in nature. Again singular, made up of only same type of molecules. The component of a compound cannot be separated by physical method. उसको H2O को कोई हाथ से तोड़ नहीं सकते हम, है ना. But it can be separated by the method which is called as electrolysis. Electrolysis means कुछ electricity pass किया जाएगा in which this they consist of positive and negative ions. तो इस तरह से dispersion होता है इनकी कटानिक और अनायनिक में. वो आप भी later on in a high class भी. Then a compound has a fixed composition as water की से. अब ऐसा नहीं हो सकता कि water अगर H2O हो तो ये water हो जाएगा. No, H2O ही है, that is the water composition.
and they has a sharp melting point. They have their own melting and boiling point. They have own characteristics of their melting and boiling point. ये मैंने आपको सिंपली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में बताया. ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगे. बट अगेन आई से दैट इफ यू नो द प्रॉपर्टीज यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब देम विद द एग्जांपल इन योर ओन वर्ड्स. कंपाउंड और एलिमेंट्स में ऑटोमेटिकली अब डिफरेंस क्लियर है. एलिमेंट्स जो है वो एक सिंगल एलिमेंट या सिंगल मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल एटम है ना. और वहीं पे जो कंपाउंड होंगे टू और मोर एलिमेंट से बने होते हैं. एंड एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. बट कंपाउंड जो होते हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं बट बाय केमिकल मींस नॉट बाय फिजिकल. एन एलिमेंट हैज इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. और कंपाउंड में क्या होता है दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट कंस्टिट्यूएंट. मींस यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है अगर तो H2 अपनी प्रॉपर्टी करता है और ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी. ऐसा तो नहीं है कि H2 दो नहीं. ये कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी को बना के चलेगा कि वाटर की प्रॉपर्टी क्या होगी. ऐसा तो H जो होता है वो गैसेस फॉर्म में होता है और वो भी है गैसेस भी. यहाँ पे क्या बना उसने लिक्विड बनाया तो क्या हुआ एक अलग प्रॉपर्टी शो की. सो दे कंस्टिट्यूट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ये भी इसमें इंपॉर्टेंट हो गया डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. देन कंपाउंड्स मेड अप ऑफ जो पार्टिकल्स हुए वो कौन हुए एटम्स. एंड बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं है ना. मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं सो मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट हैज इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. उसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. इट मींस वो अपनी प्रॉपर्टी को शो करता है. ओके मतलब अगर उसके एटम्स के मॉलिक्यूल के पास में उसके पर्टिकुलर एटम्स होंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा. फिर एटम्स जो भी साथ में होंगे दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द केमिकल बॉन्ड्स. जिसको हम अलग अलग बॉन्ड्स पढ़ेंगे आप. दे विल बी हेल्ड बाय द केमिकल बॉन्ड्स and they are all represented. The molecule are represented by the molecular formula. मॉलिक्यूलर फॉर्म जैसे वाटर का है H2O. ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. ठीक. सो द डिफरेंसेस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी क्लियर. और एटम क्या है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल क्या है मॉलिक्यूलर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड व्हिच हैज इट्स एग्जिस्टेंस. उसकी एग्जिस्टेंस है बट एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. ओके एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नॉट हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट मॉलिक्यूल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है क्योंकि टुगेदर एटम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं इसलिए. देन एटम्स आर हाईली रिएक्टिव एक्सेप्ट द नोबल गैसेस बट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते. ये रिएक्टिव नहीं होते. कैनॉट बी सब डिवाइडेड बट हम मॉलिक्यूल्स को सब डिवाइड कर सकते हैं. नो केमिकल बॉन्ड इन द केस ऑफ एटम्स. केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल जो इकट्ठा होते हैं बाय द केमिकल bonds. I think so from here थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा idea about the metals. A very rough idea of a metal and non-metal which you can just hear it out and get in your mind कि what is there. Later on molecular formula की जब हम बात करते हैं तब इनके हम symbols की बात करते हैं. Symbols was given by J.J. Berzelius. Okay? Berzelius ने 2 लेटर और सिंगल लेटर एब्रीविएशंस दिए थे कि इनको पहचानेंगे कैसे जो एलिमेंट्स नेचुरल. तो दैट वाज द J.J. Berzelius. ये मैं आपको रफ सा थोड़ा सा दे रही हूँ मैं डिटेल में नहीं लिया है. एंड द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर और द 2 लेटर्स ऑफ इंग्लिश. if they are of a similar like is carbon ले लिया oxygen ले लिया but then some of the elements have the same name this first letter. So what happens they are taking the second name of it like C को Cl कर दिया. but देखो first name is always capital other is the running. ओके ये ध्यान रखना इसमें कभी गलत नहीं करना. इस तरह से लिखा जाएगा like H will be capital again but if it is A and G and you know some of the elements are also taken by the Latin names means या ग्रीक नेम्स जो भी लैंग्वेज होते हैं तो जिसने भी बनाया होगा उसने लैटिन नेम्स किए होंगे. तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप नेम ऑफ सोडियम पोटेशियम iron, copper, silver, gold, they all been named after their Latin names. Still 20 elements अगर आप रीड कर रहे हैं तो gold, silver इन सब के symbols आपको याद होने चाहिए. ओके एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात है तो आई थिंक सो ब्रीफ
just a short, I'll try to make it out with the what kind of and how you'll form the molecular formula. So thank you. Do like, if you like, then it gives enthusiasm or a new energy so that I can give it into the next slide. Thank you.